हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर अमितवारी.net। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम एडवांस एसईओ कोर्स कर रहे हैं, जिसमें एसईओ की बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को एक एक करके कवर किया जा रहा है। अभी तक हम 6 से ज़्यादा क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है, एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जैसे एडवांस टूल्स कैसे काम करते हैं, एंड साथ ही में गूगल सर्च कंसोल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को अभी तक कवर कर चुके हैं। बट इस कोर्स के दौरान मुझे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर इस कोर्स को करने के बाद क्या वो जॉब रेडी हो जाएंगे, क्या एजेंसीज यूट्यूब कोर्स करके प्रिपेयर हुए एक कैंडिडेट को हायर करेंगी, क्या एक ऐसा कोर्स जो सिर्फ हिंदी में हो रहा है उसको लेकर भी उन्हें जॉब मिल सकती है, या फिर इस इंडस्ट्री में जिसे लगातार बताया जा रहा है कि जनरेटिव एआई एलएलएम्स के आने के बाद एसईओ कोई फ्यूचर नहीं बचा है, क्या एक ऐसा कोर्स करके आगे कोई फ्यूचर है भी, इंडस्ट्री में फ्यूचर है या नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, मैं देता रहता हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस सवाल का जवाब आपको एक ऐसे एजेंसी के ओनर से दिलवाया जाए जो 150 से ज्यादा एसईओज को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय करते हैं, दुनिया भर में क्लाइंट्स को सर्व करते हैं और कॉन्स्टेंटली स्केल अप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पर मैंने पोस्ट किया था कि मैं चंडीगढ़ में होने वाली अमेज एसईओ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं, एंड अमेज एसईओ कॉन्फ्रेंस को वेबोमेज कंपनी के फाउंडर रवि शर्मा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रवि शर्मा की जो एजेंसी है वो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स को सर्व कर रही है, एंड आई थॉट कि रवि से ज़्यादा बेटर पर्सन नहीं हो सकता है आपको एसईओ इंडस्ट्री में हायरिंग और प्रमोशन के बारे में प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो रवि को हमने बुलाया हुआ है आज, एंड आज हम रवि से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रैक्टिकली एसईओज को किन किन स्किल्स को सीखना चाहिए और क्या सीन है जॉब का इस इंडस्ट्री में। So hello Ravi, welcome to the channel. I'm happy that you agreed to give us some of your time. I know you are very busy right now in Chandigarh. So can you tell us what is your agency about and what kind of projects you are handling? How many people you have in your agency? Yeah, so the name of my agency is Webomaze, and we are a 100% SEO agency now. When we started 10 years before, we started as a IT services company where we were doing web design, e-commerce, mobile application, and SEO was just one of the 9 services we were doing. But then just before COVID, around 2019, 2020, I realized the power of being specialist. And when we started digging down into our previous clients, our previous projects, we realized 70% of our good, happy clients were from SEO. So we made a pivot. We rebranded our whole branding to a SEO only company, and since 2019 till now, it's only SEO. And since then, we've also seen a huge growth. Back in 2019, we were only like 35, 40 people. Now we are a 150 people agency with just one department, and that's SEO. Sales process very easy, account management very easy, and then everything is sort of easy with this thing. Talking about my clients, from Indian perspective, we are 100% international SEO agency. We have clients from US, from Europe, from Asia Pacific, all together working for around 300 clients now. And mostly our local SEO clients, where we are specifically working either on Google Maps or the local rankings for these local businesses, which are like actual brick and mortar type of businesses. We are based in Chandigarh. We also have an office in Melbourne, Australia, but the backend team sits in Chandigarh. सो आपकी एजेंसी 100% इंडियन है और आपके क्लाइंटेल 100% नॉन इंडियन है। अमेजिंग। वैसे यहाँ पर आई हैव अ क्वेश्चन. As you said that your agency scaled up after 2019. Now after 2023, the Gen AI came into the picture, and a lot of people are saying that SEO is dead and SEO agencies are not profitable anymore. There are a lot of videos roaming around on YouTube about that. So what is your experience? Are you seeing any decrease in demand of SEO? Are you getting less clients? Are you getting less leads? What is your opinion about it? No, I was wondering. I used to talk to my co-founder that this AI thing that might affect our business, but I don't know why, but surprisingly the business has actually grown. We are getting more serious inquiries. I think one of the reason is because a lot of business owners, especially the local business owners, they have used chat GPT content and put up on their website, their blogs. They thought they don't need SEO companies, and now they come to us that
we used to have these many rankings and these much traffic, and we have lost all the traffic. So, so I think ChatGPT happened good for a lot of SEO agencies. But there's no decline in business. There's actually increase in business. But yeah, there is a decline in non-serious inquiries when a lot of immature business people, like the startups, they used to reach out to us and thinking that SEO is a very cost-effective thing. But now the businesses that reach out to us, they know the importance of SEO, and they actually are serious about getting SEO. So business-wise, I think it's helping as of now. अच्छा रवि, लेट्स से अभी स्टूडेंट्स हैं हमारे और वो जानना चाहते हैं कि एक बड़ी एजेंसी में वहाँ पर वर्क कैसे डिवाइड होता है। आई मीन हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन योर एजेंसी, किस तरह से काम होता है? Yeah, so it's a department wise, it's just one department. We call it SEO department, but internally we have different roles. So talking from the junior, most role is the SEO analyst. So most of the SEO analysts that we hire are sometimes fresher, and they are also like anywhere between 6 months to 2 years of experience. And most of their work is around either finding links or doing link building. And then we have SEO strategists who basically sort of act as assistant to our project leads. Project lead is a person who actually runs the whole show for that project. Whenever a project comes in, it gets assigned to a project lead. Project lead has SEO strategist who dig into the loopholes, do the technical audits, try to find out what are the things that we can improve on the website, do the on-page audits, sitemap, schema, everything is done by the SEO strategists. And the project lead is, I'll say, 60% technical, 40% commercial, in a way that they also know how to handle the client because they reply back to the account management team. And on top of them, we have assistant SEO managers and SEO managers. So basically, those are the three managerial positions we have in the SEO department. If you see the supporting departments, one of these supporting departments is the account managers. We have 7 account managers and their role is primarily to explain the client in plain English language what SEO is and what we are doing, and also to understand clients' business language and explain it into some sort of technical understanding that a SEO team can have from what client is expecting. On the other hand side, we also have the content writers. So all the requests of the content, whether it is for a new landing page or for the website or for blog post, for backlinks, for digital PR, that all goes to the content writing team. Internally, they also have done some sort of distribution, like this is the content writing team for Australian clients, this is the content writing team for the US clients, because there's some sort of English nuances if you see the American English and the British English. So we have divided that sort of responsibility as well. Another support department is the sales team, the sales and marketing team doing sales for us. And then we have the human resource team for hiring, definitely. And then the admin and finance team. So altogether, these are the primarily major departments that we have within WebOmaze. And you have designers too, graphic designers, web designers? Yeah, I forgot them. We have developers and designers. So most of the clients are in WordPress. So we have WordPress developers, front-end designers, and we also have a couple of Shopify developers because we do like little bit of e-commerce, not much, but we have Shopify developers as well. Okay, so 6 months experienced guy is going to get hired as SEO intern, and how much experience should one have to get appointed as, let's say, SEO manager? SEO manager is at least 8 years of experience because we only have like few SEO managers, but most of the people that we have in our organization are project leads and SEO strategists. So project lead, anywhere between, I'll say, 5 years of experience, maybe 5 to 7 years of experience, and SEO strategists, 3 to 5 years of experience. That's the ballpark.
एंड व्हाट अबाउट लैंग्वेज बैरियर? आई मीन आर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे हिंदी में इस कंटेंट को देख रहे हैं, चैनल ही हिंदी में है, बट योर ऑफिस इज इन चंडीगढ़ एंड योर क्लाइंटल इज नॉट इंडियन, सो लेट्स से समवन हु इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, किसी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, सो डज ही और शी हैज़ अ चांस इन गेटिंग अ जॉब इन योर कंपनी? I really believe, again, coming back to ChatGPT has reduced and broken that barrier of English, because the only thing that SEO analysts and SEO strategists used to struggle was to write an email or explain what they are doing in English. But now that explanation is pretty easy. So there's no barrier to English. Yes, there's a barrier to English if you want to be a SEO manager or assistant SEO manager or in our sales team or account management team, because these people have to talk to international audience. It's not just speaking, but the listening skills has to be pretty strong, because sometimes clients have different accent. So we need people who can understand that accent and then reply back in the best possible way. या आई थिंक इतने टाइम में तो काम काम को सिखा देता है, बाय दैट टाइम एनी वन विल गेट decent in English. Okay, so anyway, Ravi, tell us something good. I mean, do you have any weird client stories that you want to share? I mean, every SEO agency owner or even SEO executives have something to share about their clients. You can redact your name and then tell us some good story. Not weird, but I think most of the time, but like one of the weird thing which I really feel about SEO industry is, and it has happened to us a lot of time, if you don't get rankings, you are fired. And sometimes if you get rankings, then also you get fired. So one of the very interesting client, she's a plastic surgeon in one of the cities in US. And with the plastic surgeons, they don't need a lot of clients, right? And there are also not lot many people who are getting plastic surgery done. So I remember when she reached out to us, she was like very client hungry. She said, no, I want so many leads. I want these many clients. I want to increase my website traffic by 10x or 20x, whatever number was. But after just like 4 or 5 months, when she started getting, I think, some inquiries, she had a call with our account management team that, you know what, I can't handle all the incoming calls coming to us. I don't have any time. I've started working on Saturdays as well. So I really want you to stop SEO, because I realized that I can't grow more. So these type of stories do happen sometimes here and there, but mostly it is success stories that we have. ओके रवि, सो मेरा अगला क्वेश्चन हमारे इस चैनल के एडवांस एसईओ कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है कि जब आपकी एजेंसी हायर करती है, व्हेन यू आर हायरिंग फॉर योर ओन एजेंसी, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स यू आर लुकिंग एट? आप किस तरह से डिसाइड करते हो कि किस स्टूडेंट को हायर करना है, किस कैंडिडेट को हायर करना है, किसे नहीं हायर करना है? व्हाट आर दी न्यूआंसेस दैट यू आर लुकिंग एट? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन अमित. सो विद द स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को कभी कभी ये लगता है कि द ओनली थिंग दैट दे नीड टू डू वेल इज़ द टेक्निकल. सो जब हम कभी किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं, फ्रेशर्स को हायर करते हैं, उस टाइम आई थिंक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग 25-30% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज वी नो दिस पर्सन इज अ स्टूडेंट. और उसको एसईओ जितना सिखाना है हमने, जितना एसईओ हम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में आएगा, अपने आप सीख जाएगा विद इन 4-5 months और 6 months. जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि उनको अपना करेक्टर कैसे बिल्ड करना है, हाउ दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अदर पीयर्स. क्योंकि एक कॉलेज का माहौल या एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का माहौल डिफरेंट होता है. एक ऑफिस में आके आपको एक प्रोफेशनलिज्म को सीखना पड़ता है, आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उनकी चीज़ें समझ के काम करना पड़ता है. यू हैव टू बी अ सेल्फ डूअर. आप इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं हो पाएगा. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पैशन होना चाहिए एसईओ का, बिकॉज अगर एसईओ का पैशन नहीं है ना, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आते हैं, बस वो एसईओ में आ गए हैं, उनको बोरिंग लग रहा है. अगर कोई काम बोरिंग लग रहा है तो वो होगा ही नहीं, चाहे आपने जितना मर्जी ट्रेनिंग करा हो, जहाँ मर्जी से किया हो, वो वेस्ट है, वो यूजलेस है. तो इसलिए अगर पैशन को अपने अंदर लेके आओगे, अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना शुरू करोगे, नॉट जस्ट इंग्लिश बट हाउ टू एटलीस्ट टेल योर सीनियर व्हाट यू आर डूइंग, या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो काम करते हुए. और उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के साथ कि हर तरह की कंपनी है, हमारी कंपनी का आई थिंक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा. जहाँ पे भी आपको पहली जॉब मिली है उसको होल्ड करके रखो एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे लंबे टाइम के लिए भी. बिकॉज जब आप
सिर्फ सैलरी के लिए जॉब्स चेंज करना शुरू कर देते हो ना, पहले 1-2 साल तो बहुत अच्छे निकलते हैं, बिकॉज़ उस टाइम हर कंपनी आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए हायर कर रही है। बट 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है आपके पास और आपको उस टाइम प्रमोशन चाहिए होता है या आपको चाहिए होता है कि आप सीनियर एसईओ बने, एट दैट मोमेंट हम भी और बाकी कंपनीज आई एम प्रीटी श्योर देखते हैं कि आपका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आर यू अ जॉब स्विचर और डू यू हैव सम स्टेबिलिटी? एटलीस्ट 1 2 ढाई साल के आपका स्पैन होना चाहिए, मेरे को लगता है एक कंपनी में मिनिमम से मिनिमम। उससे जल्दी अगर आप स्विच कर रहे हो जॉब 6-6 महीने 8-8 महीने में, तो बाद में दिक्कत आती है और ये फाउंडेशन स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाती है। एज अ स्टूडेंट यू ज्वाइन अ कंपनी, ट्रेनिंग करा, 6 महीने बाद छोड़ दिया, आई थिंक इट्स अ बैड डिसीजन। अगर आपसे एक बैड डिसीजन लिया भी गया है कि आपने एक कंपनी जो ज्वाइन करी है वो आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी यार, उसको एज अपॉर्चुनिटी लो, सीखो। एट द एंड इट्स अ कंपनी, राइट? एट द एंड वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स की भी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज विद एसईओ हम सिर्फ अपने लिए ही अर्न नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को भी ज़्यादा अर्न करवा रहे हैं, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो इन दैट वे कि आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो उस इकोसिस्टम में, एसएमईज में और एक जनरल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में भी। एक जीडीपी के लेवल तक हेल्प हो रही है आपकी जो आप काम कर रहे हो। मैं तो ऐसे बोलता हूँ अपने फ्रेशर बच्चों को। सो ऐसी ऐसी क्वालिटीज लेके आइए एंड आई थिंक उस कंपनी के कल्चर को भी पूछिए और जानिए। जैसे हमारे हर कंपनी का कुछ डीएनए होता है कि इंटेग्रिटी है या लॉयल्टी है या एथिक्स है, ट्रांसपेरेंसी है, ये 4 हमारे डीएनए हैं। हम जब कोई बच्चा हायर करते हैं या कोई स्टूडेंट हायर करते हैं, हमें ये 4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू उसको एसईओ कितना आता है। एसईओ सिखा देंगे हम, एसईओ उसको आ जाएगा, एनवायरनमेंट में रहेगा तो कर लेगा। बट अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, एथिक्स नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो उन चीज़ों पे फोकस करिए और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन डीएनएज़ को और उन प्रॉपर्टीज़ को और लर्न करिए जब कंपनी में आप आएंगे, एंड देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड ट्रस्ट द सिस्टम। कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग अस, कोई भी कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं चाहती है कि वो प्रमोट ना हो। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तो कहूँगा मेरे सारे के सारे एसईओ एनालिस्ट कल सीनियर एसईओ एनालिस्ट बने, बट इट कैनॉट हैपन, राइट? वो होता नहीं है। टॉप ऑफ द टॉप बनना है, तो वो टॉप ऑफ द टॉप कैसे बनोगे, फोकस वहाँ होना चाहिए। या दिस इज़ ट्रू। आई मीन अगर एम्प्लॉय ग्रो करेगा, एग्जीक्यूटिव ग्रो करेगा, तभी एजेंसी ग्रो करेगी। इनफैक्ट एजेंसी की ग्रोथ एम्प्लॉय और क्लाइंट दोनों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट्स के लिए है कि लेट्स से आपके पास 2 कैंडिडेट आते हैं। एक कैंडिडेट है जिसने यूट्यूब वीडियोस देखकर खुद से प्रैक्टिकल करके एसईओ सीखा है, एंड दूसरा कैंडिडेट है जो किसी स्टैब्लिश्ड एजेंसी से, किसी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आ रहा है। आप दोनों के बीच में कोई फ़र्क करेंगे, एंड अगर करेंगे तो किस टाइप के स्टूडेंट को हायर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? मुझे नहीं लगता कुछ खास फ़र्क पड़ेगा, बट लेकिन अगर कोई घर बैठ के और यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस, सेलेक्टिव वीडियोस सुन रहा है जो उसके करियर में हेल्प करेंगी, आई थिंक आई विल कंसिडर दैट पर्सन मोर स्मार्टर, बिकॉज उसने ऑर्गेनिक है, राइट? वी आर एसईओ पीपल, वी बिलीव इन ऑर्गेनिक थिंग। सो वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीख लिया है, राइट? सो देयर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स अराउंड हेयर एंड हर यूट्यूब चैनल का एक यूएसपी है, एक स्पेशलिटी है। So I think I'll prefer that person more than the normal institute wala. Correct. Okay, so I have one question about the business owners. Let's say there is one small to medium sized business owner and they are doing SEO in-house, maybe they are doing it themselves, and they want to hire an agency. How should they hire an agency? How should they hire a correct agency? And what should be their process of hiring a good SEO agency so that they can scale up? Right. So one of the most important cons that I have seen of so no offense with in-house SEO, that is a very good profile to have. But one of the things that I have seen is most of the time, if that business is not a very big business, let's say it's a small business and a SEO is working in-house just on that one website, sometimes that SEO don't see those type of challenges which we as agencies are seeing, because we are working on so many businesses throughout the world, different type of industries, different type of niche. So वो जो learning है, that is very different in agency style versus when you are just working as an in-house. So as a business owner, if you have hired an in-house SEO, either make sure that in-house SEO is learning and growing and learning to adapting to all these new things happening. Otherwise वो हो सकता है कि that SEO might get obsolete pretty quick.
So that's the only thing that I've seen. And second, there's no challenging environment also, because when you hire an agency, in agency, like for example us, we have our own leaderboards, we have our own criterias of checking how many clients, how many keywords we are ranking on. If we are ranking on this particular keyword for this client, why we are not working ranking for this particular keyword for the same client. So those type of things sometimes would challenge, and sometimes those type of challenges and those type of internal motivation is missing in-house SEO. But what I have seen, um, and any business owner who's like very growth hungry, and if he or she wants to take his business really from X to 10x to 100x, I really believe the best way is to align and hire a SEO agency. Try to find a SEO agency that has some sort of experience in your industry, some sort of experience in your geography, and then try to like talk to a couple of agencies and hire a SEO agency where you feel like talking, you feel like working with them, the vibes match. Those things are very important, not just the technical aspect of it, but also the overall culture of the organization. Yeah, the budget part is a tricky one. I mean, I think this happens with all of the agency owners, that you ask client what is your budget, how much you want to spend on the marketing, and they will ask how much they should spend, and they want to go to the minimum side. But actually, we know that it's like whatever budget you allot to your SEO agency, they are going to allocate more or less resources based on your budget, and then your results are going to differ based on that only. My own way is to tell the business owner that okay, here is the X amount that you want to spend per month on your SEO campaign. Let's now multiply this with 13, and that will be your yearly budget. Right, so make your mind that you are going to spend that much on SEO in an entire year, and you are not going to back out, because if you back out in between the campaign, it's not going to work for you. Whatever amount you have invested till then, it's going to waste too. So what is your experience? How do you prepare your leads? How do you prepare your clients about the budget? Yes, that's the first thing we tell, that SEO is not the savior of your business. We can't save your business. So you need to have not just like with the like two things. Number one, with SEO, it's very clear that it's a 2-year plan. We usually say 2-year plan for all the clients. If you think of a budget that you can keep on spending for next 2 years, and you won't start feeling that you are wasting your money until you start seeing some results. And second, the most important thing is just don't spend all of your marketing budget into SEO. SEO should be some percentage of your business. For example, a local business, they might spend, let's say, 40% or 50% of their budget into local SEO, but they should also do other type of marketing activities. Local sponsorships help for local businesses, all those type of things, Facebook ads, Meta ads, Google ads. So 50% of the budget goes to SEO, and then at least 1 to 2 years of the budget they have to allocate. Initially, we don't just tell them during the sales process, but we keep on telling it again and again and again. Our account managers are trained for this. They always tell the client that it's been 4 months, we still have a journey of 8 months or 15 months, depending upon how competitive the keywords are. Yeah, absolutely correct. Okay, Ravi, I have another question. You are hosting Amaze SEO conference in Chandigarh in October. Why are you doing it in the first place? I mean, when I first heard about it, my honest reaction was, why are you doing it? You are in Australia, you can buy Tesla stock and you just see the money grow. Why are you wasting time and energy and money here? Yeah, so many people have asked me this question. Two questions actually. Why are you wasting this money, and what's your motive behind this conference? So definitely, Amit, I truly believe it's not wastage of money, because when you start as an entrepreneur, when I started as an entrepreneur, so many people helped me throughout my journey, and that's the reason why I'm here. So I think when you are at a certain stage, you have to start giving back to the society. And in the SEO industry, what I've seen, all of our Indian SEOs, they are so just within themselves. They don't go out, they don't meet other SEOs, they don't go and network. And that's one of the reason also they can't sometimes succeed in their career, because even if you're a SEO employee or a freelancer or SEO agency owner, you need to be outgoer, you need to network with people, and you have to be a fun loving person. Then only, most of the time, then only better business start coming back to you. So
When I started going to conferences internationally, it was in 2018 when I started going to international conferences. And since then till now, whenever I've met so many friends. I've met so many friends in all these conferences I've attended in Bali, in US, in Vietnam, in Australia, in so many other countries. Whenever I'm stuck in any problem, I always give them a call back that, hey, so and so, I'm stuck in this problem. Have you faced this type of challenge in your business? And most of the time, people help me get out of those problems. I've never found answers to those problems on any YouTube video because these are very specific problems. So definitely, I don't look at it as it a wastage of money because I'm sort of building a community, building a platform where all our 300 Indian SEOs who are serious about their career are coming together. They're gonna do some collaborations. They might do some knowledge transfers. They might do some projects together. They might do some sort of learning together. So if I can bring 1% change to these 300 people, I really believe the purpose has been achieved to do this conference. And second question also, you have not asked me, but a lot of people are asking me also what's my motive, what's my business angle behind this. So there's no business angle attached to it. I really want to build something in India because Indian SEOs are so great, they are so good. We need to have our own SEO asset, our own SEO conference as an asset, so that all the SEOs, all the Indian SEOs that cannot afford to go international because going international can be expensive, they have Amaze conference as a platform to come and network with other SEOs every year and grow their network, grow their skills, meet new SEOs, come to Chandigarh, visit this beautiful city, and have some nice fun and some nice party. बट स्टिल टेल मी, आई मीन लेट्स से कि अभी किसी को 1-2 साल ही काम करते हुआ है इंडस्ट्री में, जॉब अभी छोटी है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें क्यों एमएस एसईओ कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए? व्हाई शुड दे स्पेंड मनी ऑन ऑन अ कॉन्फ्रेंस? आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो चंडीगढ़ में हो रहा है, चंडीगढ़ में खाना अच्छा है, बट उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है उनके पास किसी भी एसईओ कॉन्फ्रेंस में खाना आने अच्छा का? होगा ही एंड वी हैव वेरी अमेजिंग पार्टी, लाइव बैंड और वो सब. बट या अगर उसने 1 साल का एसईओ है, 2 साल का एसईओ एक्सपीरियंस है, अगर उसने नहीं फोड़ा है, वही रीज़न है. अगर उसको फोड़ना है तो उसको आना ही पड़ेगा बिकॉज सी वही अगेन एग्जाम्पल वही है. एक चिड़िया जब अपने घोंसले में होती है तो शी थिंक्स कि दैट्स द होल वर्ल्ड. दैट्स नॉट द होल वर्ल्ड. सो इफ यू डोंट there's a saying in English, get up and put up. So you need to get up and you need to come and present in person because वो जो value वहाँ पे होने वाली है ना, and you don't know, nobody can imagine what value you will get out of it. एक connection ही कई बार वो कहते हैं ना, एक idea will बदल देगा आपकी ज़िंदगी, वो वाला चीज़ है. Sometimes you make that one connection, you learn that one thing that totally change your profile, totally change your career, and totally change your life. I think I know this sentiment. I mean, we are kind of digital warriors. We think, and this is the overconfidence that we have, that we can do anything digitally. But let's be real. When it comes to developing relationship, when it comes to developing connections, real world interaction matters a lot. I mean, मैं अगर अपने किसी client के पास जाता हूँ, उससे personally मिलकर आता हूँ, तो I know that now I have this client for 3-4 years. इन कंपेरिजन ऑफ समवन जिससे मैं कभी मिला नहीं हूँ, सिर्फ मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स ही बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें कभी फायर कर सकते हैं और हमें भी उनके बिजनेस को समझने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है कि वो एक कनेक्शन नहीं बन पाता है. If I am in a client's office and I'm sitting there for an entire day, I'm interacting with their staff, I understand their problems, I understand their business really well, and then I can go on and do something great with that particular project. So one-to-one connection, having the real world connection is really important in this industry. Yes, and it's I think one of the other thing which I was talking to somebody yesterday also, like जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, आईपीएल का मैच है फॉर एग्जांपल, यू कैन डेफिनेटली वॉच आईपीएल मैच ऑन टीवी, बट इफ यू गो देयर तो जो वहाँ का वाइब्स है एंड यू माइट गेट ऑटोग्राफ फ्रॉम वन ऑफ द प्लेयर्स, जो वहाँ पे ब्रेक्स में डीजे चल रहा है, डांस मस्ती हो रही है और जो एक क्राउड की चीयरिंग हो रही है, दैट एक्सपीरियंस यू कांट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑन टीवी. Similarly, conferences, in-person conferences जो हैं, I think that is the bloodline. From business perspective also, sometimes you close very good deals on those in those conferences. And
and somehow we didn't have this type of event here. So I think Chandigarh is witnessing this conference for the very first time, and I'm so I was so excited when I started seeing tickets started selling. We have people coming from as north part of India as Srinagar to as south as Chennai, as east as Guwahati to as west as Ahmedabad, Udaipur, Indore, Jharkhand, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal. There's so many people coming from so many states. It's so amazing to see. In fact, when we met for the first time, instantly I imagined that we should do a video together because number one, students need to hear from an agency owner of your agency size that what makes them hireable, what are the qualities that they should work on, and also because I want people to have this sort of community interaction, and students, especially young students, they should go to places, they should go to different conferences, seminars, and meet people. Meeting people actually makes you smarter. You are not just sitting in your office, sitting in your room and thinking that okay फला SEO जो है वो बहुत ही बड़ा है and पता नहीं Right. उसने किस तरीके से सीखा होगा, पता नहीं वो किस तरीके से SEO करता होगा, बल्कि you meet them, you see that they are the normal people just like you, and you can also grow up, you can also learn, you can also rank a site, you can also grow a business. Okay Ravi, thank you so much for giving us time. I mean, I'll let you start your day. हम बहुत बहुत सुबह सुबह शूट कर रहे हैं. So I actually hope कि सभी लोग जो है वो अमेज SEO कॉन्फ्रेंस की साइट पर जाएं, टिकट परचेज करें. कूपन कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, you can use that, and I'm looking forward to meet everyone in Chandigarh on 9th October. Thank you, Amit, and thank you for having me here on your YouTube channel. I have been watching your videos from so many years. I know a lot of my employees watch your YouTube videos, and they are also excited to meet you as well in person here. So अभी सबको तो आने नहीं दे रहे हम कॉन्फ्रेंस में because it's a conference for public, not for Webomaze. जो 3-4 लोग होंगे ऑफिस के who are actually the helping us in organizing the event. So definitely they're gonna come to you and ask for your autograph. नहीं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है. आई मीन आई कैन टेल यू पर्सनली दैट इस इंडस्ट्री में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है. एवरीवन इज जस्ट SEO. सबके पास अपने अलग अलग यूज केसेस हैं. इवन इन योर कंपनी लेट्स से देयर इज वन स्मॉल जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसको भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो चीज़ें पता होंगी जो शायद Right. क्लाइंट को नहीं पता, जो शायद उसके SEO मैनेजर को नहीं पता होगा. सो एवरीवन इज सेम इन दिस इंडस्ट्री. बड़ी डेमोक्रेटिक सी इंडस्ट्री है हमारी. एंड लेट्स सी कि कितने नए स्टोरीज हमें इस बार अमेज SEO कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलती है. ओके रवि, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू so much for talking to us, and I hope that Amaze SEO conference successful हो, and I also hope कि हमारे जितने भी चंडीगढ़ या हरियाणा या हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपकी कंपनी में जाएं जब भी इंटरव्यू देने के लिए, उनका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए. Thank you, Amit, and thank you for having me here on your YouTube channel. I have been watching your videos from so many years. I know a lot of my employees watch your YouTube videos, and they are also excited to meet you as well in person here. So अभी सबको तो आने नहीं दे रहे हम कॉन्फ्रेंस में because it's a conference for public, not for Webomaze. जो 3-4 लोग होंगे ऑफिस के who are actually the helping us in organizing the event. So definitely they're gonna come to you and ask for your autograph. So this was Ravi and we talked about a lot of stuff. हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, बहुत सारी हायरिंग और प्रमोशन और किन स्किल्स के ऊपर काम करना है और कॉन्फ्रेंसेस में क्यों जाना चाहिए, सोशल लाइफ कैसे SEOs को बनानी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी बातें की हैं. आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा. कैसा लगा वीडियो, क्या क्वेश्चन है अगर रवि से कुछ करने हैं अपनी कैरियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, प्रमोशन के बारे में, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उनसे पूछें और आपको जवाब दे सकें. रवि को हम टैग कर देंगे ताकि वो खुद से जवाब दे सकें. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग एवरी क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.